This last class what conference we will now be recorded. let me know. फिर आवाज कट गई. I asked in the last class what we have discussed. So data types and identity operator. Yes. And variables, objects, all these things, operators. Now in the coming class, now today's class, we have discussed the different type of data types. What are the first of the data type? Numbers. Exactly, numbers. Numbers in Python is integer, float, complex, all these. Okay. Yes, sir. It is used to store a numeric values. Okay. First one is Python has three numeric values. Which one have? Because they are behaving similarly, but it's totally vary from the data type to data to data. If we have the categorical data, then we can convert it. If we have the uh, numeric data, then we also that convert it. First is integers, second is float, third is complex. Okay, now integers. What are integers? So from minus infinite to plus infinite. Okay, integer is nothing, it's a numerical value which we stored in any object or a variable by any name. Suppose a equals to 100, b equals to 200, yeah, suppose minus 100, c equals to 1 into 20. Now we print a, print b, print So B c. आपने लिया नहीं है. Oh, sorry. Okay, now we got all the three values. This much is clear. Yes, sir. I should be mentioned over here. What are the integers? Integers. These are the basic terms. You must be aware of this. Are positive or negative numbers with no decimal points. Okay. Now, how we can convert it? Now, type conversion. Type conversion of integers.
How it's possible? Let's see the example. Put equals to 101. It will be now it become a string. B equals to int of a converts string data type to integers. C equals to integer 1 to 2. Suppose we have taken the decimal point now. Now in this I have taken the with the decimal value and the integers value in the form of the string. Now my target is to convert these value into the string, integers or floats. How we can convert it? So क्या किया? So I just print the printed D B and run this code. क्या हुआ? 101. ठीक है, क्योंकि I already convert the string value to the integers by putting the int and then the function of the a. Then I see the print of C. It's the 122 because I convert the float value to the integers, and when you convert the float value to the integers, it remove the decimals value. Clear? Now, second step is floating data point. Floating point numbers. What are this? It is a positive or negative real numbers with decimal points. Now I've seen an example. Suppose a equals to 101.2, b is equals to minus 101.2, c is equal to the 111.32, d equals to the 23.4 into 2. Now if we go for the print of a, print सर आवाज of नहीं आ रही. print of b. Now in the print of C and the print of D, because this is the floating value. Floating value is a negative and positive both. So see the output. I am not converting the values. In the previous session, I convert the values, but in this, I just input the value into the form of the float values. Float is nothing, the decimals value. Okay. Now, again, we convert the floating numbers. Now we convert the normal value into the floating.
This much clear? Floating point numbers. And what are these? These are the float function, converts any data type to floating point numbers. ठीक है. Example is a equals to 301.4, that is the string name. B is equal to the float of a hashtag converts string data type to floating point number. C equals to 121 converts integers data type to floating point numbers. Now we print B and print C. Now see output. Now it's convert the values from string to float and integers to float. These are the type of the conversion we can do it according to the data. When we got the data from the customer side or the company side, or so you can manipulate the data variables by doing this conversion by using this function. Next step is complex number. Complex numbers. Numbers combination of a real and imaginary part. Complex numbers are, what are the form of the complex number? The form of x plus y j, where x is a real number, real part or real number, and y is imaginary part. Imaginary part.
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. I perform the conversion of the data points because when you move further in the machine learning section, in the data science section, or some other section also which is related with this statistical part, you must be convert these variable because these variable conversions play the wider role. I already told you, if we have the categorical data into the alphabetical form, then it will be very difficult to prediction on the alphabets by using the statistics or by using some other tools, because prediction is only on the numbers, not the alphabets. We can indicate the number in the alphabets into the numbers by creating a new column. Okay, so example, a is equal to कॉम्प्लेक्स फाइल ले लेते हैं. Imaginary part, print of is pi plus oj. Clear? If we move further, b is equal to complex 110 comma 23 and convert 110 with the real part and 23 as imaginary part. Okay, now we move on the second type of data type, that is nothing is a string in Python. A string is the sequence of characters in Python. We can create a string using single or double quotes. I already show you in the previous session कि मैं सिंगल भी यूज कर सकता हूँ, डबल भी यूज करता हूँ. ये टोटली डिपेंड ऑन मी. ये दोनों ही लेगा. Mainly with the in the R also. In the R programming, it also use the same. Both are same in Python. मैंने एग्जांपल लिया. Now str equals to the computer science. ठीक है, मैंने प्रिंट कराया str
माइनस कॉमा दिया स्पेस देके str print string. This is clear. Yes, sir. In the second step, what we are doing, we are print again str square bracket minus str 0 print string from position 1 to. Now we are doing the indexing. ठीक है. See this. Clear है? Yes, sir. अब इसमें थर्ड स्टेप मैं दिखाता हूँ मैं आपको हम और कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं. The str sorry print string from position 1 to 3. ओ सॉरी मैंने ऊपर कुछ और लिख दिया यार. ठीक है. Python always started from 0 0 1 2 3 0 from starting and back from -1. तो 0 में क्या आया हमारा C आया, 1 में क्या आया O आया, 2 में M आया, 3 में P आया. नाउ यू कैन आस्क मी कि ध्रुव इसमें P क्यों नहीं आया? एम आई राइट? Yes, sir. बैक साइड से हमेशा -1 लेके चलता है. इसकी रेंज जो हो गई वो क्या हो गई 1 से लेके 2 तक. 3 -1 माइनस का काम करेगा. ठीक है. Yes, sir. फिर मैं इसको यहाँ पर 4 कर देता हूँ. तो क्या हुआ? आ गया OMP अब. Yes, sir. The starting is counting is from 0 and from the back side from the -1. Now again see the other format. See this 0 1 2 3. ठीक है.
3 से लेके एंड तक आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज को ब्लैंक छोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इट्स इंडिकेट्स दैट इट कवर रिमेनिंग पोर्शन। ओके, Yes, sir. now we move. I creating the string. See this. Now next step is boolean. Now we convert the small to capital, that known by the name of uppercase. Contain upper case. No, I print the that variable. See this, false. Okay. Yes, sir. Now fourth function is list. What is list? You already aware. What is list? Array. Array in Python. But yeah, if somebody not aware with the arrays, then how you can explain it? List Array. are collections Yes, sir. of items. You know, so that's why you told me the alternative name or another name of the list. But if someone is fresh and not aware with the IT technology, not with the aware with the some other tools, तो वो लिस्ट को क्या समझेगा? लिस्ट जैसे कहते हैं ना घर में योर मदर प्रिपेयर ग्रोसरी लिस्ट, तो वो क्या है? द लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स. Yes, sir. It is also the list. Each item had its own index. Now what coming the index? Index is nothing the place of value. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? This much clear till yet? Yes, sir. Now we move on the tuples.
list and tuple both are same expect सर a एग्जाम्पल list. नहीं करेंगे? Sorry, एग्जाम्पल नहीं करेंगे लिस्ट का? किसका लिस्ट का एग्जाम्पल मेरे को बताया तो था, फिर से बताऊं क्या लिस्ट का एग्जाम्पल? सर बता दो। बताता हूँ। लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यस सर। What is the word mutable indicates over here? Editable, we can edit the numbers. Exactly. In the list we can edit, but in the tuple it's a immutable. A list, it's editing or it's non-changeable. Okay. Yes sir. सर लिस्ट और टपल ऑब्जेक्ट है या डेटा टाइप है? सॉरी, ये डेटा टाइप है, ये टपल अलग डेटा टाइप। टपल हमारा क्या करता है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करता है, लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है। ये दोनों के फॉर्मेट में अंतर है प्रेजेंटेशन में। क्लियर? सर आपने यहाँ पे लिखा है कि टपल इज इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। कहाँ लिखा? पाइथन ऑब्जेक्ट लिखा है। पाइथन ऑब्जेक्ट सर, पाइथन हाँ, डेटा टाइप होना चाहिए ऑब्जेक्ट की जगह। why I use the word object, I will tell you, just wait a second.
Now clear? Yes, sir. Now I show you some basic. Just, uh, just wait. I will show you the some The example. indexing of the tuple also begins with 0. Yes, definitely. Just see this 21, 36, 14, 25 is starting from the 0 and ending on the 3. I put the 1, then I got the number on the 36. I got the 4, then see, go for the out of the range. Yes, sir. Nothing will out of the range. Okay. If I will be press 3, then will be the 25. Okay. Now the example of list. I see. 55 is 8. Okay. So, हाँ बोलिए. लिस्ट में जो आपने लिखा है 0 हाँ. पोजीशन पे 5 है. 0.55 है. I added already here. See the चेंज second किया है line. उसको बाद. Change नहीं किया, अच्छा, edit करा. म्यूटेबल. Yes. That's why I show you the example. I already asked you कि what is the meaning of mutable and immutable. ठीक है, क्लियर है? यस सर. सॉरी. देखा आपने, इसमें एडिट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्लियर. Now we come on another step, that is fifth part is set in Python. तो इसमें इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ रहा है. अगर हम टपल 0 की जगह कोई नंबर लिखेंगे. वो एडिट नहीं हो सकता ना, इम्यूटेबल है ना. ये तो वैसे नंबर लिख तो सकते हैं ना उसे उसमें. मतलब टपल 0 इक्वल्स टू 5 ऐसे करके लिख तो सकते हैं. कैसे कैसे उससे फिर से ज्यादा बताइए. क्लियर नहीं होगा. बताइए, क्लियर करिएगा फिर से एक बार. हेलो. सर जैसे हमने लिस्ट 0 पे 55 लिखा था तो वो चेंज हो गया था. तो वैसे हाँ, ही यहाँ पे हम टपल 0 पे अगर कोई और वैल्यू दे दें इसको टपल 0 को तो वो चेंज तो होगी नहीं. ये लो मैंने ये कर दिया. ठीक है. अब अब हो सकता है. अब हुआ नहीं हुआ ना. नाउ इट्स ओके. यस सर. सर पहले सिंटेक्स एरर आ रहा था. ओके ओके, अच्छा. हाँ, अब मैंने वैल्यू इनपुट नहीं कराई थी. सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट. यस सर. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द सेट.
What are sets? Set is an unordered collection of unique and immutable items which cannot be modified. जैसे कि I show you some example. In set we use the curly braces. Okay. Clear? This is clear. सर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. Okay. This is clear. In the set we use the curly braces. Okay. Now tell me what are variables? The characteristics of an item is a name given to a memory. Here we can store any value. Memory location. ठीक है? ठीक है? A variable is a behave when considered as a container, because here we can store a value which hold a value. ठीक है? Just clear? yes sir. Now we have seen the assigning of the value. Of a value to variable. Suppose name is equals to the Python. ठीक है, it is a string data type. Sum equals to none ले लेते हैं, none. Variable without value. ठीक है, none. None is not defined. ठीक है, so if we can define it, then suppose we take a 23.4 is an integer's value. B is equal to the 3.2. 3.3 is a float value. Now we go for the sum equals to A plus B. In the print of ठीक है. Yes sir. Now some basic functions is that suppose we want to fetch some values. Suppose we go for the basic Python. मैं थोड़ा सा आपको basic बताता हूँ. What will be the
which we are very common and mostly used by the everyone. What is that? MS, CS. Math, BA, anything else we can take it. Okay. Now we go for the measurement of the length. Now top down, of course, with the 4. Clear? Yes, Now sir. we use append. One function is the append function. Sir, is length only used for list? Yes, definitely. It can use for the list only. Now we use the append function सर because अगर हम a length. इज इक्वल टू कंप्यूटर करें और फिर करें प्रिंट लेंथ a, तो क्या वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन कंप्यूटर शो करेगा? नहीं, वो शो नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो एक कंप्लीट एक ही वेरिएबल है, बीच में कॉमा का डिवीजन नहीं आ रहा, उसको डिवाइड नहीं कर रहे. वी कैन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, देन इट कैन शो यू द लेंथ. अदरवाइज इट कैन शो यू ओनली वन वन इंडिकेशन. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ. योर क्वेश्चन इज दिस ना. नो सर. देन सर टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन. लिस्ट नहीं बनानी, बस ऐसे ही सी में एक C इज इक्वल टू कंप्यूटर कोट्स में. मैं वही देखना चाह रहा था कि आपको कितना समझ में आया. चलो, आपको एटलीस्ट समझ में आ गया कि इन द अल्फाबेट वी हैव रिटन द सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, और डबल कोट्स एंड नहीं, और डबल कोट्स. यस सर. It show you the 8 number of counts. यस सर. ठीक है. Now append function. What is the use of append function? Takes you to the ending of a paragraph of the page. Okay. Append always used to add new variable. Okay. Suppose I want to add course, comma, insert 0 position where I want to fit it the art. ठीक है. And I go for the course. See this. Yes sir. ठीक है. और course course dot append. Now I am not defining any position. Okay. I'm just only at the history. ठीक है. एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन. कहीं कोई गलती हुई है.
See this, by default it always add the new variable at the last, and if you mention the position then it can enter that value in any position. ठीक है? Yes, sir. क्लियर? Yes. आज के लिए क्लास यहीं ओवर है क्योंकि मेरी और भी क्लासेस हैं. ओके. Yes, We sir. already did half an hour from the starting just because of some issues. Okay. And the same timing is Yes, sir. remaining 10. Okay. I hope Yes, so it sir. will be clear for you. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Thank you. All the best. Take care. Yes, sir.